why should we use SQL? Okay, so in this entire session today's entire session, we will learn the SQL part 2. That means the advanced part of the SQL. Okay, so before starting this session, let me introduce myself because some of the students were not present in the last session. Let me introduce shortly. I am Narendra More from Pune. Right now, I am working in a TCS as a senior software developer. So I have almost 5 years of experience as a software developer. Previously, I work in IBM, wherein my responsibility was to create, to develop, and to implement the application from scratch and to deploy till the production environment. In IBM, where I have spent around 2.5 years. And coming to the work location history, I have a different work location history, right from the Bangalore, Chennai, Hyderabad, and Pune. Right now, I am based on the Pune. Coming to the technology, I have worked on the different technology as a Java, Spring Boot, then SQL, then IBM cloud, then mainframe testing in automation or manual. Okay, my current domain is a Java with Spring Boot as a backend framework with the SQL. Okay. So in this bootcamp, we will see these three measures. Just a second. We will see CTE, then subquery, then advanced function, additional data type, and data security and data integrity. Okay. We will see each and everything theoretically plus practically. Okay. Can you revise first? Okay. Most of the students were not present in the last session, I think. Let me quickly go through the first session. Okay, I have previous slide as well. Don't worry, I simply cover the basics of the SQL in my last session. So see, in the last session I cover the basic SQL, the SQL function, data integrity and security, introduction only. Okay, so see, basically what is SQL, let me tell you from scratch. सो पहले क्या होता था ना, लाइक इन कॉलेजेस और इन इंडस्ट्री और एनीवेयर, लाइक 20 or 25 years ago, डेटा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द कॉलेज. ओके, कॉलेज के अंदर स्टाफ और टीचर जो होते थे, वो सारा डेटा या प्रेजेंटी हो या कुछ भी डेटा, सो एवरीथिंग दे यूज टू यूज द फिजिकल फाइल्स, राइट, इन ऑर्डर टू स्टोर द डेटा. वो उसमें फिर परसेंटेज हो सकते हैं, देन डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन और एडमिशन इंफॉर्मेशन, राइट. सो लेटर ऑन व्हाट हैपन, वो सारे चेंजेस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होते गए डे बाय डे. सो इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. लेट्स कंसिडर वन शॉप. ओके, अगर मुझे अगर कुछ खरीदी करना है, लेट्स से आई वांट टू बाय सम टी शर्ट और शर्ट और जर्किंग एनीथिंग. ओके, जैसे ही मैं शॉप में शॉप इज नथिंग बट अ डेटाबेस. फर्स्ट व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस मतलब एक ऐसी मेमोरी, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आपका जो मेमोरी कार्ड होता है या हार्ड डिस्क, उसको भी हम डेटाबेस कह सकते हैं इन लोअर लैंग्वेज. ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज. एक्चुअल डेटाबेस से बहुत बड़े होते हैं. राइट नाउ डेटाबेस इज हैंडलिंग बाय ओरेकल कंपनी, ओरेकल एंड IBM. ओके, लेट्स कंसीडर एक हमारे पास एक शॉप है. शॉप के अंदर, शॉप इज नथिंग बट अ डेटाबेस. डेटा इज लाइक अ क्लोथ्स जो मुझे बाय करने, राइट. तो क्लोथ्स के टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स. टी शर्ट का अलग सेशन, देन पैंट का अलग सेशन, देन जर्किंग हो, एनीथिंग. ओके, ओके, श्योर. ओके, सॉरी, पार्डन मी. Yeah, let's consider one shop. Okay, if I want to buy some jerking, then I will simply go to the shop and I will ask to the salesman, okay, that I want to buy jerking. So he will guide me that you have to go to second floor or first floor, anything, and go right or go left. There will be a one dedicated session for the jerking or for the t-shirts. So this way, that salesman is acting as a media, understood, for this entire shop. Getting, salesman is acting as a language mediator or anything you can consider. So that language mediator or that a media is nothing but the SQL. Got it? SQL means structure query language. Like salesman is a part of a communication between customer and the requirement in
database. Understood? Now what is now you might have good idea about the SQL. Just about the concept, okay? Till now any signal no. Some guys are saying not audible. Voice is kind of breaking in between. Sir, kindly confirm is my It's voice audible clear? now. It's audible now. You can start. Okay, okay, sure. Guys, now understood SQL. See, now technically an organized collection of the information. As I said, the collection of information, collection of data, and technical there is a one more scientific definition: sets of the table, each having a different class of data. Okay, let's see. SQL is a structure query language, generally which used to storing, manipulating, and retrieving a data of customer or user. Okay, these three are the main functions or functionality of the SQL. Getting? So फिर वहाँ पे SQL के there are different types of SQLs are available in the market. MySQL, then Oracle, MyAccess, Sybase, then Postgres. So nowadays in industry, MySQL, Oracle, and Postgres, these SQLs are using MNCs, small scale industry, medium scale industries nowadays. Okay, getting? These are the free of cost. You can download from internet at any time for your practice purpose. That is MySQL. आप MySQL भी कर सकते हो या Postgres. So I would suggest go ahead with the Postgres क्योंकि उसका UI भी simple है for understanding purpose. Okay. Let me erase. Okay, see, there are the two types of database basically. One is a relational, one is a non-relational. Okay, relational means what? So name itself indicate its meaning. Relational means there will be some relation between the rows and column. So let's say attendance sheet in a college or of in a school. Okay, so attendance sheet में basically क्या होता है, वहाँ पे rows and columns होते हैं. तो columns are generally for the roll number, then name, address, mobile number, etc. and marks. Getting? और rows में क्या होता है, that data of the column. Understood? Let's say my roll number is 12, my name is Narendra, then my address is Pune. Okay, then my mobile number 1234, something like that. Getting? So relational means whatever the data we are going to store, that will be stored in the form of column and rows. So that is nothing but the relational database. Understood? So this is a practical definition. Non-relational means what? So non-relational means uh, let's say if I have some in non-relational database, there is only one NoSQL. In that NoSQL, I mean non-relational database, we are calling it as a NoSQL, and there is only one database, that is a MongoDB. Very few companies are using a MongoDB nowadays. Okay, because the thing is, syntax of the no relational data relational database are too much critical, and it's not easy to understand. Okay, so that is the basic thing, and we are not storing a data in a form of columns and row in the MongoDB. This is the basic difference of the database. Okay, guys, getting? Okay, this is just an let's say refreshment of last session. Okay, so that we can cover the advanced as well. So see, this is nothing but my database in actual database table. See, ID, then department ID, name, city, and salary. This is an table of one of the employees, not one of the employee, one of the companies or organization. Let's say one is the employee ID, then department ID, then Ajay, then Bangalore, and here is the salary. Okay, so डेटा इसी तरह से फॉर्म होता है इन एक्चुअल एज वेल. इवन यूजर को जो डेटा दिखता है, सो इसी फॉर्म में वो दिखता है हमें. So see, there are the different types of SQL commands are available. One is a data definition language, DDL, DML, DCL, DQL, and TCL. We will see here. Data definition language. Data definition language means what? Let's say मेरे पास एक data है, but I want to keep that data on my server.
Let's say I have a one server. This is my server. Okay, this is nothing but the memory, or you can imagine this is the database. I have a data, manual data, and I want to map that data in my database server. So database can be anything, as I mentioned, Postgres, MySQL, my Access, anything, right? Or Oracle as well. So वहां पे अगर मुझे डेटा स्टोर करना है, तो आई हैव टू यूज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. तो इसमें क्या होगा, क्रिएट कमांड हम यूज करेंगे. जनरली वी आर कॉलिंग इट एज अ क्वेरी. ओके, और ऑपरेटर क्रिएट करके, by using create keyword, we will be able to create a table. Okay, then drop is nothing but in order to delete something. Drop, truncate and delete, these three are the similar. We will see the difference as well. Okay, then alter means, let's say I have a data here. I have a data of Ajay. Okay, if I want to increase the salary of Ajay, in that case I will use alter. Alter means we have to update something. Getting, instead of 58, let's say if organization wants to increase to 60, then in that case we have to use, developer will use the alter. Understood? Then there is a data manipulation. So see, manipulation means, name itself indicate that its meaning here also. We are manipulating about the data. So once we created a data here, then we will be able to manipulate, right? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, ओके, या लिंक्डइन पे अकाउंट है, तो अकाउंट उसके बाद व्हाट एक्शन आई कैन डू, आई कैन सिंपली इंसर्ट एनीथिंग, राइट? आई कैन अपडेट माय इंफॉर्मेशन, आई कैन डिलीट माय पोस्ट और इंफॉर्मेशन. अंडरस्टूड, राइट? आई कैन लॉग, आई कैन कॉल एनीथिंग. बट ये कब होगा? आफ्टर क्रिएशन. Okay, next we have learned that is the transaction control language. That means, let's say ये सारा डेटा मेरे सिस्टम पे अवेलेबल है, बट व्हाट इफ आई वांट टू पुश द एंटायर डेटा टू द क्लाउड सर्वर as a backup or as a DR. DR is nothing but the disaster recovery. Okay, so वो डेटा अगर मेरे सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे, बट वो डेटा मुझे ग्लोबली पब्लिश करना है ऑन सर्वर, एट सर्वर लेवल. सो इन दैट केस वी विल यूज कमिट, देन सेव पॉइंट्स, रोल बैक. दीज आर नथिंग बट काइंड ऑफ अ बैकअप. जैसे हम बैकअप लेते हैं ना, लेट से मेरे पास एक फोल्डर है कोई तो भी, let's say a pictures का folder है. If I want to take a backup, then what I will do, I will simply copy that folder in my PD or in my mobile, or I will simply push that folder to my Google Drive. Getting? So similarly यहाँ पे भी work होता है. Then there is a one more, that is the data query language. Query means, let's say I have some query, and if I want to know some data from select from table, in that case I will use select command. And there is a one more, data control language. Let's say right now I'm working in the TCS. हमारे पास एक डेटाबेस है. now we are using a postgres. Okay, so postgres के जितने सारे भी हमारे एम्प्लॉयज होंगे हमारे टीम के, दोज एम्प्लॉय विल हैव एन एक्सेस. ओके, अगर मैं सेम एक्सेस, सेम क्रेडेंशियल आपके साथ शेयर करता हूँ, सो इट वोंट वर्क इन योर केस because of some restriction, firewall restriction. You can say the VPN, VPN, right? Virtual private network. So वो एक्सेस देना या ना देना, ये मैनेजर पे डिपेंड करता है. Getting, let's say I change my project, if I want to change my project in next week, so in that case what my manager will do, my manager will simply revoke my access. अगर मेरे जगह पे कोई रिप्लेस होता है, लेट से अजय मेरे जगह पे आते हैं, तो इन दैट केस अजय को एक्सेस ग्रांट किया जाएगा. नाउ यू अंडरस्टूड दिस डिफरेंस? Yes, no, screen is not visible. My screen is visible, sir. My screen is visible, right? Yes, yes. I had enable chat. Okay, due to their Okay, interaction. Okay, I will enable it. Whenever you want to ask questions, I will enable it. Yeah. okay, okay, understood. Guys, getting right, so that I can go ahead and continue next slides. Okay, okay, just say yes, no, yes, no. Okay, see, this is what we have discussed. So see, as I mentioned, there are many types of database, Postgres, MySQL. So this is the common UI of Postgres database. Okay, unfortunately I'm not able to erase, so let me try.
ओके, सो सी दिस इज अ स्कीमा. लेट्स सी, एक कंसीडर करो आपके पास एक डेस्कटॉप, यू हैव अ डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे आपने एक फोल्डर कभी क्रिएट किया है. इनसाइड दैट फोल्डर यू आर अगेन क्रिएटिंग अ फोल्डर, एंड इन दैट फोल्डर और इन अ मेन फोल्डर you can put any file, any ppts, any text file, right? Understood यहाँ तक? So this schemas is nothing but that folder. उस फोल्डर के अंदर you have a main folder that is the sales. Let's consider schemas. Okay, schemas के अंदर क्या हो सकता है? Name of the database, name of the tables, or anything, types or views. Getting? Let's consider एक organization TCS. This is nothing but my schemas. Okay, TCS के अंदर क्या हो सकते हैं? IT department. You understood? Then BPS or BPO, that is a non-technical department. Then medical department, ये भी होते हैं, right? So those are nothing but the sales. और सेल्स डिपार्टमेंट भी होते हैं हमारे पास, सेल्स एंड परचेस. गेटिंग? सो सिमिलरली आईटी डिपार्टमेंट्स के अंदर टेबल्स होंगे हमारे, और टेबल्स के अंदर आईटी डिपार्टमेंट का डेटा स्टोर होगा. देन मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर वी विल हैव द डेटा ऑफ डॉक्टर्स और डेटा ऑफ पेशेंट्स हु रिपोर्टेड टू द डॉक्टर. गेटिंग? देन वी इन द सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे पास टेबल्स होंगे. तो सिमिलरली सेल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे टेबल्स है, सी टेबल, और टेबल का नाम जो है वो है स्टाफ. अंडरस्टूड? So ये अभी recently I have shown, right? So see, this is nothing but the table of employee. Getting? Okay, यहाँ पे let's see, let me put here stop. See, this is the name of table और ये table का सारा डेटा है. You understood this UI? ये इंडस्ट्री लेवल पे सब ऐसा UI हमें देखने को मिलता है. See here the database symbol as well. लेट मी गो ahead. ओके, सी अभी तक तो हमने देखा कि डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है. एसक्यूएल इज लाइक एक मीडिया होता है इंटरेक्ट करने के लिए. इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, और एसक्यूएल इज एज सिंपल एज इंग्लिश. अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंटैक्स, सी फर्स्ट सिंटैक्स दैट आई एम गोइंग टू शो यू, क्रिएटिंग अ फर्स्ट डेटाबेस. फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस, राइट? सो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम. क्रिएट इज अ कीवर्ड और क्वेरी डेटाबेस इज आल्सो अ कीवर्ड. ओके, ये सिंटेक्स स्टैंडर्ड सिंटेक्स होगा. पहले क्रिएट करेंगे, देन डेटाबेस हमें लिखना पड़ेगा, देन वी हैव टू गिव द डेटाबेस नेम एनीथिंग. सो इन आवर केस व्हाट इज द डेटाबेस नेम देन? सो डेटाबेस नेम इज सेल्स. अंडरस्टूड? यहाँ पे देखिए सेल्स. माय पॉइंटर इज विजिबल, लेट मी शो यू. सी ये डेटाबेस नेम है मेरा, ये मेरा टेबल नेम है. So now database तो create हो गया, but we have to create a table now. Now there is one syntax, create table name, and these are the parentheses. Okay, in this parentheses we have to give some data types and data variable name. Like have you ever learned any language, C, Java, Python, anything? उस लैंग्वेज के अंदर you are defining some datas, you are defining some variables with data type. You remember? Let's say अगर आप जावा पढ़ते हो तो that in that case you will have int integer, then a is equal to 10, integer b is equal to something like that, right? और python में भी हो सकता है, c language में भी. So similarly we have this thing, create a table, then column name we have to give, then data type भी can be anything, integer, then character, var, etc. ओके, देन कंस्टेंट क्या होता है? वो जो डेटाबेस होता है हमारा, सॉरी डेटा टाइप होता है या कॉलम नेम, उन उस उसी को हम सम कंस्टेंट, वी आर अप्लाइंग सम रूल ऑन दैट डेटा टाइप. दैट इज नथिंग बट द कंस्टेंट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ फॉर माय कंपनी, ओके, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर और फॉर माय क्लाइंट, ओके, क्लाइंट है बैंक का. सो इन दैट केस, सो मेरा अकाउंट नंबर विल बी कंपलसरी, विल बी मैंडेटरी. अगर बैंक, इफ आई एम यूजिंग द बैंक एज अ कस्टमर, राइट? इन टर्म्स ऑफ द कॉलेज, द PNR नंबर और रोल नंबर विल बी मैंडेटरी. अंडरस्टूड? And in terms of the banking, I would say the transaction ID will be mandatory. So similarly
लेट्स से अगर मेरे पास column name I have mentioned as account number, data type will be integer, then constant will be primary key. Primary key is nothing but the unique key, else I can mention the unique key as well. Understood? Because primary key is nothing but the unique key for that entire table. हैव यू एवर सीन एचडीएफसी का अगर कोई अकाउंट है तो वहां पे डुप्लीकेट अकाउंट नंबर हैव यू एवर सीन फॉर एनी अदर customers? No, right? That is nothing but the rules. As I mentioned in the definition, constant is nothing but the applying a rules on this data type. Guys, understood? See here, select. Now till now we have created database, then we have created tables. Now I have to, let's see, I have everything I have entered in the database, but I have to fetch the data, I have to manipulate the data. Okay, in that case I will use select. Then star means it will print all the columns from student is nothing but the name of table. Guys, getting? Yes, no, yes, no. Okay, sure. Let me show you quick example from here. Whatever we have learned so far, quickly see. As I mentioned, when can I use select? I will use select at that time when if I want to fetch some data from database. Let's say this is my database. I will share you all the links and notes. Don't worry. See, just now consider यहाँ पे focus करो सिर्फ. This is a customer, okay? ये customer का table है, right? Then here is a order. ये order का table है. Then here is a shipping. Here is a shipping का table, right? So customer table में mandatory parameter क्या हो सकते हैं? So it could be a customer ID, then first name or last name, then age or country. Okay, understood? So see, if I want to fetch, if I want to see these data, अभी जो आप देख पा रहे हो ये स्क्रीन पे अवेलेबल है, बट प्रैक्टिकली क्या होता है ना, ये सारा डेटा एक सर्वर पे अवेलेबल होता है. जैसे कि लेट्स से दिस इज माय सर्वर, दिस इज माय डेटाबेस सर्वर, ये सारा डेटा टेबल यहाँ पे स्टोर होता है. बट व्हाट इफ आई वांट टू फेच दैट डेटा, एंड व्हाट इफ where I can find this data, how can I retrieve this data on my system? So in that case we will have the tools postgres mysql. Okay, so similarly एक virtual website है. I will ping this link as well after this session, okay, or end of this session. Let's say, as I mentioned the query, you remember what is that query? Select star from table name. So let me go there. Here I'm using select. So which column I have to see, which column I want. Let's see, I want this column first name. I'm simply copying in order to avoid some grammatical mistake. Okay, now from, this is a standard syntax. From then table name, this is my table name. So can you guess what will be my output? Let me run SQL. See, you got my point. First name, ये सारा डेटा जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सारा डेटा स्टोर था डेटाबेस पे, वो मैंने फेच किया बाय यूजिंग दिस कमांड सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर. अंडरस्टूड? लेट्स सी, जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पे स्टार यूज किया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार? स्टार मीन्स इट विल प्रिंट ऑल द कॉलम्स. लेट्स से there is a one more fun fact. Let's say customer. Okay, let me do quickly. Column, then age, then country. See what happens here. ये मेरे पास एक स्मॉल टेबल है. स्मॉल टेबल के अंदर आई हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स. कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड कंट्री. अंडरस्टूड? सो यहाँ पे व्हाट हैपन, यू नो, सी, ये तो मैंने प्रिंट कर लिया जितने मुझे कॉलम चाहिए थे, ये तो मैन्युअली पॉसिबल था. बट व्हाट इफ आई हैव अ n number of columns? What if I have a 10,000 column? In that case it won't be possible to put each and every column name here. Understood? Getting my points? So in that case what I will do, there is one shortcut. Simply you can use star.
and run. Now you are getting, ये सारे कॉलम्स प्रिंट हो जाएगा. स्टार इज नथिंग बट द ऑल कॉलम. Guys getting? Yes, no, no, yes. ये थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूँ सेशन बिकॉज लाइक ये इट्स काइंड ऑफ रिवीजन बिकॉज मोस्ट ऑफ यू वर नॉट अवेलेबल इन लास्ट सेशन, राइट? Okay, okay, getting. Sure. Let me go back. Now you understood. Let's see अगर आपको if you have doubts in, let me take an example, shipping में how many columns you are able to see? 1, 2, 3, correct? These are the columns, vertically columns and horizontally rows. So 3 columns. अगर मैं यहाँ पे select star then from shipping करता हूँ and run SQL, so see shipping ID, then status, then customer. You are getting, right? Let me go ahead. So similarly हमने अभी तक तो कॉलम तो क्रिएट कर लिया, बट हाउ कैन आई इंसर्ट द डेटा इनटू द डेटाबेस? लेट्स सी आई हैव दिस डेटा. अगर मेरे पास स्टाफ का एक मेंबर ऐड होता है लेट्स से 11 नंबर पे, so in that case I have to use some query, right? I should know which query, how can I insert the data? So for that we have one query, that is the insert. So see, so insert का भी एक syntax है, insert into table name, then column 1, column 2. What is column 1 and column 2? Let's say if I want to push, if I want to update the data or insert the data in a column 1 and column 2 only, in that case I will mention the column name here. If I want to update or insert the data for 4 columns, in that case I will use column 1, column 2, column 3, column 4. ये column is 1, 2 is nothing but the name of column. Getting? See, here is a live example, roll number, name, and here are the values. Getting? Let's go ahead. See, as I have mentioned, keys in the SQL, these are the very important primary key and foreign keys. Okay, agar if you are going to mention SQL as your skill in your resume, so definitely interviewer will ask you this question. Even I used to ask this question for experience and fresher guy in my previous project, wherein I got the chance to take an interview for internal project requirement. So we generally used to ask this question: what is the difference between primary key and foreign key? So just consider. Okay, here I have example. Let's consider student. I have one student as a one table, and I have a city as a second table. Okay, so primary key. So let's go through the definition. It is a column in a table that uniquely identify each row. There is only one primary key and should not be null. Then what is foreign key? Foreign key is a column in the table that refers to the primary key in another table. Okay, you have a technical definition, but I will tell you in a simple way. Forgot everything. Just consider आपके पास एक database है. Let's consider this is the student database. Okay. अगर आप as a student you are in a college or you are in a university or anywhere, okay, so in that case you will have a unique roll number. Unique roll number is nothing but your primary key. Understood? In terms of bank, account number is nothing but the primary key. Have you ever seen मेरा और आपका अकाउंट नंबर सेम है? नो. या आपका और आपका सिस्टर का, भाई का या फ्रेंड्स का अकाउंट नंबर सेम है? नो, नेवर, राइट? सो प्राइमरी की इज नथिंग बट यूनिक की. वो और दैट कैन नॉट बी नल. लेट्स से आई हैव एन अकाउंट इन एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक, एनी बैंक. वहां पे मेरा अकाउंट नंबर नल हो सकता है, ब्लैंक हो सकता है. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो दैट इज नथिंग बट द प्राइमरी की. एंड व्हाट इज फॉरेन की? फॉरेन की मतलब लेट्स से दिस इज अनदर टेबल. ओके, टेबल नेम ऑफ हैविंग अ नेम सिटी. अंडरस्टूड? तो इस सिटी के अंदर आई हैव अ आईडी अगेन. ये आईडी, इफ this id is a foreign key for this table, but if I am going to use this id or I am going to refer this id of a table city in the table 1, in that case that id will become a foreign key. See, name itself indicate that its meaning here again. Foreign means what? परदेश जो हम कहते हैं. परदेश से अगर कोई इंडिया में आता है, परदेश में वो चाहे कितना भी बड़ा कोई भी हो, लाइक कोई भी पोस्ट पे हो, फॉर एग्जांपल
जैसे हम कहते हैं क्लास 1 क्लास 2 या गवर्नमेंट ऑफिसर, बट इंडिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, राइट? बिकॉज वहां पे उसको प्राइमरी है वो, बट इंडिया में वो सेकेंडरी बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, सीटी टेबल के अंदर भले वो प्राइमरी है, बट यहाँ पे अगर हम रेफर करेंगे तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। दैट मीन्स फॉरेन की। गाइज, यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स प्रैक्टिकली? ओके ओके, यस यस, ओके, लेट मी गो अहेड. So see, so similarly, as I have mentioned constraint, what is the constraint and the clauses we will see. Constraint is nothing but to apply some specific rule on data. Clear? So constraint क्या हो सकता है? Not null. I will show you how to use, then unique, then primary key. Okay. Let me go there and show you. Okay, here also one example. See, if I want to create a table, create table, then student. Okay. Create table and student. So यहाँ पे id integer not null. That means id is the name of variable, or in SQL we will say id is nothing but a name of column. That column id is nothing but the id should be integer. It should not be character, right? Then not null means id should not be empty. That we are applying some rule on that id. Guys, getting? सी, इंटरव्यू में इसी तरह से आपको सवाल पूछे जाएंगे, दिस वे. देन देर इज अ वन मोर वेरिएबल, दैट इज द लास्ट नेम. लास्ट नेम मीन्स इट कैन बी वेरिएबल कैरेक्टर. You know the varchar. These are the data type of SQL: integer, varchar और character. Varchar इसकी जो लेंथ होती है 255 कैरेक्टर, दैट इज नथिंग बट द बाइट. ओके, लेट्स से माय नेम इज नरेंद्र मोरे, दैट मीन्स 8 plus 4, that is up to 12 character I can insert here, right? So I don't think so कि किसी का नाम more than 255 character हो सकता है बाइट. अगर होगा तो then in that case we can increase the size here. So first name should not be null, then first sorry, last name should not be null, then first name varchar. Okay, then age is nothing but the integer, and we are applying check here. Check as a age should be greater than or equal to 18. If the person age is 18 or more than 18, then he will be eligible for voting or election. So this is what here we have a syntax. Now you got my point. Like how, where can we use the constraint? See here the constraint, here's the data type, and here is the name of column. Let's go ahead. So see, limit, set a upper limit. Okay, let me go there and quickly tell you. Let's see हमने अभी तक क्या देखा. लेट्स सी, ये जो टेबल था, इस टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 5 डेटा है हमारे पास, राइट? बट व्हाट इफ आई वांट टू सी द डेटा of first three rows. Okay, so in that case I will simply use limit as a 3 and I will run. So output क्या होगा मेरा? Only 3 rows I will be able to see. What if I want to see only 2 rows for that particular table? See यहाँ पे, are you able to see? Getting? So as I have mentioned, SQL is a structured query language. It is as simple as English. Select from, shipping, then limit, and then to here. Okay. So then we have a limit. Okay. Then group by. We will cover this group by in advance as well. Let me tell you the basic difference of the drop, delete, and truncate. This is a very very important interview point of view. Drop, delete, and truncate is what is drop, delete, and truncate. That is a C. Truncate means remove all the data from the table. Okay, here we are not deleting a tables, we are deleting a data of table. And delete, when can I use delete? Delete means delete or remove a specific row from a table. Then drop means remove an entire table. So यहाँ पे एग्जांपल देखिए. So ये जो एग्जांपल, ये जो दिख रहा है ड्रॉप means we are dropping the entire table. Getting? Truncate means we are simply dropping a data with columns. And in delete we are simply deleting a specific row जो मैं मेंशन करूंगा. गाइस, गेटिंग? ये थेरेटिकल हो गया, ये लाइक पिक्चराइज दिस वे. यस, नो नो, यस.
Okay, so then let's say I have a delete and drop, then why should I use these many things? I have a delete, okay, why should I use truncate and drop? So there are some advantages and disadvantages. So truncate अगर मैं यूज करता हूँ, that means we cannot be roll back. You know the meaning of rollback? Rollback means हम बैकअप नहीं ले सकते. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई मेरे एंड्रॉइड से या आईफोन से पिक्चर्स डिलीट करता हूँ, कोई भी कैमरा से कैप्चर किए हुए, अगर मैं उसको डिलीट करता हूँ तो डिलीट होके वो एक फोल्डर में स्टोर होते हैं, जैसे कि रिसाइकल बिन में. फिर वहां से अगर मैं डिलीट करूंगा तो परमानेंट डिलीट होंगे. एल्स इट विल बी डिलीट ऑटोमेटिकली डिलीटेड आफ्टर 60 days or 90 days. That too depends on the company's rule. Okay, so similarly truncate means अगर मैंने रिमूव कर दे, that means we cannot be roll back. और डिलीट की यूज करते, that can be roll back, हम उसका बैकअप ले सकते हैं. Let's say accidentally if I deleted some data of customer, और मैं रोल बैक कर सकता हूँ if I use delete command, delete query. Okay, and drop का भी सेम होता है, कैन नॉट बी रोल बैक. Guys getting? Okay, see what is joins then. As I have mentioned, like there can be many types of joins, many types of tables available in the database. अगर वो टेबल से मुझे वो टेबल को ज्वाइन करने, सो हियर अगेन द नेम वही कहता है कि ज्वाइन मीन्स वी हैव टू ज्वाइन टू टेबल्स और टू और more than two. Okay, so let's consider table A, table B. Table A में जो data available है, left join, right join, inner join and full join, these are the types of joins. There are n number of types, but these are the base, primary and basic and very important interview and the knowledge or practical point of view, I would say. Okay, so left join means left side का data will be printed along with right में जो match हो रहा है, that will be printed. राइट जॉइन मीन्स राइट साइड का जो टेबल होगा वो सारा प्रिंट हो जाएगा, वो सारा मुझे दिखेगा. और जो डेटा का कंटेंट होगा, लेट से आईडी जो लेफ्ट टेबल में अवेलेबल होंगे वही मुझे प्रिंट होंगे. और इनर जॉइन मीन्स ओनली द यूनिक डेटा विल बी प्रिंटेड फ्रॉम बोथ टेबल. एंड द फुल जॉइन मीन्स दोनों टेबल में कंबाइन करूंगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स सी स्टूडेंट टेबल है और फीस है. What if I am performing full join on these two tables? Guys focus here. अगर स्टूडेंट और फीस ये दोनों पे मुझे फुल जॉइन परफॉर्म करना है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली यूज दिस कमांड. हियर आई विल यूज फुल जॉइन. ओके, सो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और इसके आगे ये प्रिंट होंगे ये टेबल. दैट मीन्स ये कंबाइन हो जाएगा. इन शॉर्ट यू आर गेटिंग? सी फुल जॉइन मीन्स दोनों टेबल्स हम कंबाइन कर रहे हैं. Now there is a subquery. Okay, this is again we will cover in the advanced because that is a part of advanced SQL. Aggregate function, we have aggregate function minimum, maximum, count, sum and average. Okay, okay, we will take this example later. Guys, let's see. Now till now we have seen the basics of SQL that we have deep dive in the last session with the practical. Now in today's session we will continue with the advanced function, with the advanced SQL. Okay, but advanced के लिए you should know the basic first. Don't worry if you don't know, I will cover each and everything. So let's start with the there are multiple CTC subqueries, advanced function, additional data types, and data security and data integrity. Okay, so before starting this subquery, I just wanted to tell you this wildcard. What is the wildcard? Let's say मेरे पास बहुत सारा डेटा है. Okay, but what if I my requirement is I want to print, I want that data, I want a student of I want data of students whose name start with A or whose name start with B. Getting? So in that case ये wild card हम use करते हैं. Getting? लेट से जैसे कि अल्फाबेटिकली आ जाएंगे सारे. अगर अमन होगा, अमय और एनीथिंग अभिषेक, तो ये सारे प्रिंट हो जाएंगे. सो इन दैट केस आई हैव टू यूज सिलेक्ट देन स्टार फ्रॉम ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉइज इज नथिंग बट माय नेम ऑफ टेबल. Where is nothing but the clause. Okay, name, like name means name of the column. Like ये भी एक कीवर्ड है, ऑपरेटर है. ए और परसेंटेज सिंबल, दैट मीन्स जितने भी सारे ए से स्टार्ट हुए होंगे तो दैट विल बी प्रिंटेड. लेट मी शो यू प्रैक्टिकली हियर. एसक्यूएल एडिटर.
लेट्स से यूएसए जॉन, ओके, ये फर्स्ट नेम हम कंसीडर करते हैं, ओके। कस्टमर, ओके, इसको रिमूव कर देते हैं इंटायर थिंग। लेट्स से मेरा क्या था ना वो, फर्स्ट नेम, मुझे फर्स्ट नेम में से वही चाहिए जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है। आई वांट अ डेटा ऑफ first name whose name is starting with the J. So in that case, what I will do, I will simply say select star from customer. Customer is the name of table. Then first name here in a single quotes ended with the semicolon, J percentage. So what will be my output? Can you guess? Can anyone guess? What will be my output from here? How many rows I will get? Twos, exactly, right. See, oops, syntax error, first name from customer. What happened? What happened, guys? Okay, my bad. I forgot to use where clause. Again, here it is saying name like. Oops, sorry, pardon me. Okay, see, select star. That means I want to search in on the all the entire columns. Okay, from where? From customer table. Where is the clauses, okay, where first name like J। लेट से यहाँ पे कुछ एंडिंग हो रहा है क्या, टी से, एन से एंड हो रहा है, नहीं, लेट से डी से कुछ तो चीज एंड हो रही है। सो इन दैट केस आई विल यूज एन, सी, जॉन अगेन, और लेट मी पुट डी हियर। See, can you observe one thing here? Percentage is nothing but it will consider A to Z character, कौन से भी कैरेक्टर वहां पे वो कंसिडर करके और ऐसा नेम प्रिंट करेंगे जिनकी एंडिंग डी से हो रही है। लेट्स से इफ आई देयर आर सिमिलर और नॉट डी, let me change the table name order and d is like, okay, so in this case, okay, uh, my column name is different here। see, यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे वही डेटा मिल रहा है जिनका नाम डी से एंड हो रहा है, कीबोर्ड then mouse pad, getting। so similarly we have n number of wild card, let's say ये हो गया, then percentage a, let's say in order table I, if I want data, if I want a name of item which contain letter I, okay, फिर वो आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है, anything। so in that case what will be my output? Monitor। guys, you are getting practically? Yes, yeah, actually that was my bad, okay. Can we get a multiple character using? Yes, we can. Okay, okay, see, there is a one more thing। अगर लेट से यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि हम कौन सा भी नेम प्रिंट कर पा रहे विदाउट एनी लिमिट। what if I want a name which contain a 5 letters only? In that case I will simply use underscore 5 times। सी, 5, यहाँ पे मैंने 5, यहाँ पे एक्चुअली वैसे दिखेंगे नहीं, but I simply put, see, 1 2 3 4 5, it will show mouse item, okay, getting। let's say मैं कस्टमर आईडी यूज करता हूँ एज अ कॉलम नेम, तो कस्टमर आईडी, और यहाँ पे कस्टमर्स में only one character is available। okay, forget about this, let me change the column table, then column as a country like, और यहाँ पे मुझे यूके वाले चाहिए, ओके, यूके इज अ 2 कैरेक्टर, ओके। ऐसी कंट्री चाहिए मुझे जहां पे कंट्री विल कंटेन 2 कैरेक्टर्स।
See, UK. You guys are getting right. So let's go ahead. So what is subquery then? Okay, ये अभी तक हमने जो देखी वो सारी queries थी. Subquery means we will see the definition. Subquery is known as a nested query. So nested query, nested का मतलब you know. So nested loop कभी सीखा है आपने? If loop inside the if loop, that is nothing but a nested. So here again query nested means query के अंदर एक query होना, that is nothing but the sub query in simple language. Okay, so you see, sub query are the powerful features of the advanced SQL that allow you to embed or compute the statement within the another SQL statement. By breaking down the complex data retrieval into the smaller query, the logic behind your SQL code becomes much easier to understand. ये आपको समझ में आ जाएगी चीज. आई विल लेट यू नो प्रैक्टिकली. यू कैन यूज द सब क्वेरीज विद इन वेरियस क्लॉजेज. एज आई हैव मेंशन देयर आर द एन नंबर ऑफ क्लॉजेज राइट फ्रॉम द हैविंग क्लॉज. अभी जैसे हमने वेयर का यूज देखा, फ्रॉम भी देखा हमने, राइट. देन सिलेक्ट कर देते हम टेबल्स को, सॉरी कॉलम्स को. देन हैविंग क्लॉज वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड. सो लेट्स सी सब क्वेरी का एक डिफरेंट यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. ये हो गई मेरी हमारी मेन क्वेरी. ये भी मेन क्वेरी, देन ये भी मेन क्वेरी. ओके, सो सब क्वेरी क्या होती है? यहाँ से सब क्वेरी स्टार्ट होती है. लेट मी चेंज द कलर. यहाँ से हमारी सब क्वेरी स्टार्ट होती है. ओके, ये सब क्वेरी. तो सबसे पहले क्या होगा? ये सब क्वेरी की कोई भी वैल्यूज होंगी, वो वैल्यू रिटर्न होगी. रिटर्न होके यहाँ पे कंपेयर होगी. तो सी, सिलेक्ट कस्टमर नेम. कस्टमर नेम इज नथिंग बट कॉलम. ओके, कॉलम होगा. फ्रॉम कहाँ से? कस्टमर टेबल से. देन वेयर कस्टमर आईडी. इन, इन इज नथिंग बट द ऑपरेटर. जैसे हमने लाइक यूज किया था ना, लाइक. सो इन मतलब इसके अंदर. यू आर गेटिंग. इन मीन्स इनसाइड. सो इनसाइड क्या? तो ये क्वेरी का जो कुछ आउट, जो भी आउटपुट होगा, वो आउटपुट यहाँ पे कंपेयर होगा. कस्टमर आईडी अगर यहाँ पर होगी, so that will be printed. Guys getting? Yes, no, no, yes. Which part you want me to repeat? Yes, Bhageshri, I will share the interview questions and the study material as well. Don't worry. At the end of this session. Okay. Yes, I will share everything. Don't worry. MySQL data while SQL is language you can read to manipulate. Correct, correct. As I mentioned, MySQL is a store that is database type here. Correct. Guys, यहाँ तक समझ में आया आपको क्वेरी? Let me take another example. So see, so see, select then star. I am selecting n number of column from tutorial.incident 2014. Let's consider this is nothing but the name of table. Don't worry about the big name. Okay, this is nothing but the name of table only. Okay, हम select कर रहे हैं many columns from this table where date. So date के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है parenthesis. So this is nothing but the again sub query. As I have mentioned, sub query का यूज क्या होता है? Recursively हम करते हैं. Then definition में you remember there is a one term complex. See, breaking down the complex data retrieval into smaller queries. ये हमारी big query के instead of writing a big query, I am simply returning here. Guys getting? ये सब क्वेरी हमने पुट कर दी. इसका आउटपुट ये वेयर के साथ कंपेयर होगा. फिर डेट के सामने प्रैक्टिकली कोई तो भी डेट होगी. अगर ये डेट होगी तो प्रिंट करो. इफ you remember if else loop, have you ever seen in python, in any other language, c++ java? if ये अगर execute होता है, then execute. if this condition is satisfied, then go inside, else execute the second part. so similarly यहाँ पे इसका आउटपुट वेयर डेट, अगर ये रिक्वायर्ड डेट मिली या मैच हुआ, देन इन दैट केस इट विल बी प्रिंटेड.
Getting? Okay, fine. See, then next is a additional data type. As we have seen some of the data types recently, integer, varchar. Okay, so there are that those data types has been divided into many part. Like these are the primary numeric data type, string data type, and date and time data type. Okay, guys, just a minute. Yeah, sorry. So we will see numeric data types. Okay, so here is a small integer, then big integer, decimal. There are n number of, but the important is integer, then decimal. Most of the developers or most of the interviewer may ask you only these types, so you have to focus, you have to remember. That doesn't mean you don't have to learn others, but you should know, you must know actually integer. Okay, then decimal. These are the very important. So यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल इंट दैट इज नथिंग बट इट कैन बी स्टोर द नंबर्स बिटवीन, ये यहाँ पे रेंज होती है, राइट. सो स्मॉल इंट अगर मैं यूज करता हूँ तो इन दैट केस उसकी उतनी ही रेंज के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. अगर उसके ज्यादा हम एक्सीड करेंगे सो इट वोंट बी अलाउड. सो इन दैट केस आई हैव टू यूज इंटीजर अगेन. अगर मेरे पास और बिग डेटा होगा, ज्यादा होगा, सो इन दैट केस आई विल यूज बिग इंट. Guys, getting? So accordingly we have to do these things. Then decimal होता है. So decimal can store the number up to the 311072 digit before the decimal point, up to before the decimal means, let's say percentage जैसे हम कहते हैं ना, let's say 90.50, 90.50. Okay, so that means before the decimal इतना वो स्टोर कर सकता है, this much length. और आफ्टर अप टू द डेसिमल, आफ्टर डेसिमल इतना वो लेंथ स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी होती है. गेटिंग? सो एज आई मेंशन, इंटीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेसिमल इज सेकेंडरी. लेट्स गो विद द स्ट्रिंग डेटा टाइप. स्ट्रिंग के अंदर होते हैं वेरकैर, सॉरी कैरेक्टर, देन वेरकैर एंड टेक्स्ट. अभी हमने रिसेंटली वी हैव यूज्ड वेरकैर, यू रिमेंबर. In the practically I use when I created the tables, that time we use the where character for the name. So character means what? Can store the character, can store the characters of fixed length. Let's say मुझे एक डेटा, एक कॉलम क्रिएट करना है of having a name, having a address. Let's consider address only. तो that doesn't mean अगर मैं कैरेक्टर यूज करता हूँ एज अ डेटा टाइप तो उसका वहां पे मीनिंग नहीं होता है. क्यों? बिकॉज कैरेक्टर के अंदर हम फिक्स लेंथ देते हैं. लेट्स से कि कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्स आई एम पुटिंग 50, 50. ओके, सो इट वोंट वर्क बिकॉज एड्रेस फील्ड ऐसी है कि वो कितना भी हो सकती है. इट कैन बी गो अप टू 40, 40 कैरेक्टर, 70 और 10 और 20, राइट. परमानेंट नेम, नेम, then colony name, this way bay name, etc. Getting? So in that case, uh, uh, I would say like developers or most of the users are not using this character data type. Instead of we are using the varchar, because here we are getting capacity to update the data till the given length. Getting? Let's say varchar अगर मैं यूज करता हूँ और मेरे varchar की जो लेंथ है 255 if I am giving, so I can store my address up to 240, 253, 252. Guys, getting? Else मैं single भी put कर सकता हूँ. Let's say my colony name is national highway, so national highway at residency. So it can be goes up to 12, 15 or 20. Getting? So text क्या होता है? Can store the character without limitation. text भी वही होता है, वहां पे लिमिट नहीं होता है. So most of the developers are using varchar and text. और इंटरव्यू में interviewer will definitely ask you these questions. What is the difference between var, then character, then text? Getting? Let's go to the date and timestamp data types. Okay, timestamp क्या होता है? जैसे कि मेरी करंट सिस्टम में
let's say if I want to print the some if I want the data of current date and time, in that case I will use timestamp as a data type. So current जो कुछ भी होगी चीज वो सारी हमें मिल जाएंगी, not current. It depends on like how we are using constraint, how we are applying rules. So that too depends on, okay. So date अगर होगा तो उसमें हम date store करेंगे only. अगर मैं time use करता हूँ तो obviously time. पहले भी एज आई हैव सेड कि एसक्यूएल एक एज सिंपल एज इंग्लिश है. लाइक आपको सिर्फ यू हैव टू रिमेंबर लाइक व्हाट आर द डेटा टाइप्स एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा टाइप. ओके guys, getting get it. सब क्वेरी डिटेल में कीजिए. ओके सो सब क्वेरी लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. लेट मी इरेज. See, sub query means what? Let's say select star. Guys, focus here. Then from tutorial, this is nothing but the name of my table where date equal to, यहाँ पर ऐसा कंसिडर करो date equal to, date equal to यहाँ पर मेरी date है let's say 10/7/2024. Just this is just an example. और फॉरवर्ड ये क्वेरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, दिस इज नॉट अवेलेबल. ओके सो मुझे वही डेटा चाहिए जहाँ पे 10 जिस कॉलम के अंदर 10/7 और 24 ये डेट अवेलेबल होंगी. बट दिस इज अ फिक्स डेट. ऐसे केस हो सकती है ना जहाँ पे मुझे डायनेमिक डेटा चाहिए. फॉर एग्जाम्पल डायनेमिक डेटा सी, अगर आप क्वेरीज देखोगे सिलेक्ट मिनिमम डेट, मुझे वही डेटा चाहिए जहाँ पे मिनिमम डेट होगी. मिनिमम इज एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम ट्यूटोरियल. ये मेरा नाम हो गया नेम ऑफ टेबल, देन ये हो गया कॉलम नेम, ये कॉलम से. गेटिंग? मुझे वही डेटा चाहिए और मिनिमम डेट, बट मिनिमम डेट आई डोंट नो. सो इन दैट केस आई एम यूजिंग सब क्वेरी हियर. लेट्स से आई हैव यूज डेटा, मेरे पास 1 लाख पीपल्स का डेटा है. ओके सो इन दैट केस इट वोंट बी पॉसिबल टू चेक मिनिमम डेट, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो इन दैट केस आई विल यूज सब क्वेरी, राइट. अगर स्मॉल डेटा होगा लिमिटेड, सो इन दैट केस आई कैन इजीली फाइंड डेट. So that is the main purpose or main motto of the subquery. Now you got Adarsh. Yes, Om. You will get certificate. There will be one quiz at the end of this session, so you have to attend that quiz. Then you will get certificate. Okay. See now here the date and time data types. Okay. Okay. This is we have already been covered. SQL integration with the backend code. Now you might have a question. ये क्वेरीज तो ठीक है, क्वेरीज तो हमने देख ली, बट ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. ओके जस्ट अ सेकंड गाइस. So everyone, there will be a quiz. I am sharing the link for that. Okay, so after that, you will get the certificate. Yeah, Narendra sir, you can start. Okay, okay, sir. Yes. Okay. See, like you might have one question like how to use the query in the real world. Query सी, अगर ये यहाँ पर देख लो ये हो जावा का सिंटेक्स, जावा का एक लाइन मैंने उठाई है मेरे कोड से. सो हियर द वेयर इज द पॉइंटर, इट इज पॉइंटिंग. ओके सी, यहाँ पे मैंने क्वेरी एज अ एनोटेशन यूज किया है. ओके फॉरगॉट अबाउट द एनोटेशन ऑल, जस्ट रिमेंबर annotation is nothing but we are telling to the compiler that this is a query. ओके एनोटेशन इज नथिंग बट लाइक लेट्स से अगर मैं एप्रॉन वेयर करता हूँ व्हाइट एप्रॉन, इन दैट केस सामने वाले को पता चलेगा अरे ये डॉक्टर से या ब्रदर या हॉस्पिटल में वर्क करता है. गेटिंग?
अगर मैं लाइक एडवोकेट का वो सूट होता है, वो अगर ये करता हूँ, वेयर करता हूँ, सो इन दैट केस सामने वाले को पता चलेगा कि ये एडवोकेट ही है, इवन दो आई डोंट हैव डिग्री, दैट डजंट मैटर। सो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं क्वेरी एट द रेट क्वेरी मेंशन करता हूँ, सो दैट इज नथिंग बट द एनोटेशन, इसको ऑफिशियली एनोटेशन कहते हैं। क्वेरी मतलब वो एसक्यूएल क्वेरी होगी, apart from SQL there will be nothing. Getting, this is an real world example, okay, just to understand। यहाँ पे मैं आपको देखो, सी एक क्वेरी के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्ट यू, मीन यू देर विल बी, यू इज नथिंग बट द कॉलम, देन फ्रॉम what happened? Okay, then from user where is a clause, then u dot state is equal to 1, जहाँ पे 1 होगा स्टेटस में वो प्रिंट करो। दिस इज व्हाट द क्वेरी इज सेइंग, ओके। सो इसका मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ इन एसटीएस। So it will take 30 seconds to launch. Let's wait, or meanwhile, okay, it's opening. Okay, see, so it's throwing an error, but forgot about the error just now. So I have a one class, जैसे कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर आप क्लासेस देखते हो, राइट। पाइथन का सेव होता है टेस्ट डॉट पी वाई से डॉट पी वाई, जावा का भी सेव होता है डॉट जावा से सिमिलरली, सी सी प्लस प्लस का सेव होते हैं, हम फाइल सेव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट सी पी पी, करेक्ट। सो सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्वेरी मैंने मैप की, ये मेरी हो गई क्वेरी जैसे हमने पढ़ी, ओके। सो यहाँ पे हम कलेक्शन एज अ फ्रेमवर्क यूज, कलेक्शन एज अ फ्रेम, ओके, हाँ, आई वुड से डीएसी यूज कर, डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यूजर इज माय ऑब्जेक्ट, देन हियर वी आर सिंपली पासिंग फाइंड ऑल एक्टिव यूजर्स, ओके। ये इसी तरह हम क्वेरी को मैप करते हैं, यू आर गेटिंग। अगर कुछ चेंजेस आते हैं फ्रॉम यूजर एंड, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पर हम वो चेंजेस इंप्लीमेंट करते हैं। let's say let me put r any one of the query, any query, okay, let's consider, let me copy and paste here, see this is how it will work, getting। और ये सारा होता है डाउ लेयर के अंदर, और ये होगा हमारा जावा प्लस एसक्यूएल। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम JDBC यूज करते हैं। देयर इज वन टर्म JDBC, दैट इज नथिंग बट द जावा डेटाबेस कनेक्शन और कनेक्टिविटी, ओके। दिस इज जस्ट एन रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अगर देर 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 इज वन मोर थिंग, मेरे पास डेटाबेस भी है, मैंने तो सारा डेटाबेस भी क्रिएट कर लिए, लेकिन हाउ कैन आई लिंक दैट डेटाबेस, तो मेरा अनदर एप्लीकेशन है ना, दिस इज नॉट माय डेटाबेस, राइट। दिस इज इक्लिप्स, नेक्स्ट वर्जन ऑफ इक्लिप्स, वी आर कॉलिंग इट एज HTS। सो यहाँ पे फिर कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सो इन दैट केस वी विल यूज दिस एज अ स्प्रिंग डेटा सोर्स URL। यहाँ पे हम मैं मेंशन करूंगा माई एसक्यूएल, इफ आई एम यूजिंग माई एसक्यूएल एज अ डेटाबेस, here local, then this will be my IP and this will be my schema। So you remember what was our schema's name, our schema's name was schema2, you remember, और schema parenthesis थे कुछ तो था, 2 ही था शायद, schema2। so this way we can use, और मेरा डेटाबेस को आईडी पासवर्ड होंगे, so I will simply map those ID पासवर्ड here। फिर सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम ये आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिकली लॉग इन करेंगे उसके अंदर, ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट, गेटिंग। सो ये होगा इंटीग्रेशन का पार्ट। So this was an additional knowledge, like practical industry point of view। SQL integration समझ में आ गया with backend। So again, in advanced SQL, this is a very important common table expression, that is a CTE। So see, common table expression means it is a temporary result that can be referenced within a select, insert, update, or delete statement. Okay, CTEs are defined using the with keyword. Focus here, with plays a very important role, without without uh, with keyword there is a no CTE। अगर आपको कोई definition पूछता है, if you have mentioned that SQL as a your skill in a resume,
or else you have mentioned like SQL master class or anything or SQL advanced. So in that case, interviewer definitely ask you this question. So what is CTE? So with where can I use the with keyword? In which case we can use the with keyword? So this cross question he may ask you. So see, with keyword and allow you to create a name reusable subquery within your subquery statement. So see, this is a theoretical part. I will show you practically. But you have to remember common table expression के अंदर with keyword is a very mandatory. Okay. सी नाउ हियर अभी तक हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कैसे करते देखा, डेटाबेस क्रिएट कैसे करते बाय यूजिंग सिलेक्ट इंसर्ट और क्रिएट कीवर्ड. ओके. सो सी एज आई हैव मेंशन सीटीई अगर मुझे क्रिएट करना है, इफ आई वांट टू क्रिएट अ सीटीई इन दैट केस आई विल यूज विथ कीवर्ड. definition may be mentioned था, right? So next will be my CTE as my CTE is nothing but the common table expression name. That can be anything. Even you can give your name. Even I can give my name as well. Like let's say with Narendra as. Okay, as what? Select. Let me highlight here. Point out. Laser point. Select A B C. A, B, C, these are nothing but the column name. Then from table one means table in any tables. So ये जो part हो गया मेरा, ये हो गया common table expression. Guys getting? ये common table expression हो गया. With के बाद जो भी आता है, वो सारा common table expression की query होती है. इसी को हम कहते हैं CTE. उसके बाद हमारी जो स्टार्ट होती है वो होती है मेन क्वेरीज. सिलेक्ट ए सी फ्रॉम माई CTE. For example, let me go back there again. Let's consider this is a customer table. Guys, focus here. This is a very important in advanced SQL. Okay, very important. ये मेरा कस्टमर, दिस इज नथिंग बट द नेम ऑफ टेबल. और ये सारे दिख रहे हैं ऊपर की लाइन में, ये दोज आर माय नेम ऑफ कॉलम एंड दीज आर माय रोज एज अ डेटा ऑफ कस्टमर. अंडरस्टूड यहाँ तक? लेट्स से मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, बहुत सारा डेटा है, इन नंबर ऑफ रोज, इन नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके. और मुझे लिमिटेड डेटा के साथ डील करनी है. लेट्स से कंसीडर कंट्री यहाँ पे यूएसए यूके यूके. ओके. यूएसए बहुत सारे, बट यूके देयर आर टू. बट व्हाट इफ आई वांट टू डील विद ओनली दिस टू यूके? मुझे ऐसे डेटा के साथ डील करना है. आई वांट दोज डेटा वेयर द कंट्री इज यूके. गेटिंग? और यूके का डेटा एक प्रिंट हो जाए और उस डेटा यूके का टेबल एक टेम्पररी टेबल के अंदर स्टोर होना चाहिए और उसके साथ मैं डील करूंगा. सो इट विल बी इजी फॉर मी. यू गॉट माय पॉइंट? सी डेफिनेशन में था, यू रिमेंबर वेयर इज दैट स्टेटमेंट? Create a name reusable subquery within your statement. Okay, they provide a way to simplify complex query and make them more readable. Getting? I don't think so ये virtual इस पे वर्क होगा, but let me try. Discord यहाँ पे बेसिकली वर्क तो होना चाहिए, या एक्चुअल डेटाबेस में भी वर्क हो सकते हैं. लेट्स सी विथ, देन व्हाट इज माय नेक्स्ट? CTE नेम था, दैट कैन बी एनीथिंग, इट्स अप टू यू. एज. ओके, ये हो गया सिंटैक्स स्टैंडर्ड. ओके. तो इसके अंदर आई एम गिविंग कंट्री सिलेक्ट. ओके, मैं पहले क्या सिलेक्ट करता हूँ? सिलेक्ट कंट्री. लेट मी सिलेक्ट ओनली टू कॉलम, कंट्री एंड एज. इसके बाद क्या था? देन फ्रॉम, कहाँ से सिलेक्ट करना है? फ्रॉम कस्टमर. ओके. सो देन नेक्स्ट सिलेक्ट. नो, मुझे डील क्या करना है? सिर्फ कंट्री के साथ. कंट्री, देन फ्रॉम customer. I miss some syntax. यहाँ पे starting, closing, select country.
should not throw a syntax error. Okay. From customers, customer close. Okay, done from my city. Okay, my bad. Here I have to give CTE underscore name. See, now you got one point here. What is that? Let's see. ये ये था मेरा सिलेक्ट, ये था मेरा सीटीई. ओके, सीटीई क्वेरी. इस सीटीई क्वेरी ने एक एक टेबल क्रिएट किया वर्चुअली, not practically, temporary. We cannot say virtually because virtually that is a different thing, different concept. Let's see, एक टेबल क्रिएट किया, उस टेबल टेबल का नाम दिया सीटीई नेम. ओके, सो उसके साथ अगर मैं कुछ भी छेड़छाड़ करता हूँ, that means that will be a limited. You are getting? Now I want to print some countries from CTE name. CTE नेम के अंदर जितने भी कंट्रीज होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे. गेटिंग? अगर मुझे सिर्फ यूके और यूएसए चाहिए, इन दैट केस आई विल यूज वेयर क्लॉज. गेटिंग? वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूके और यूएसए, दिस वे. गाइज गेटिंग? सीटीई क्लियर? सीटीई यहाँ पे फोकस कीजिए. सीटीई इज नथिंग बट टेम्पररी टेबल. We are creating temporary table from main table, from this table, और इसी को CTE कहते हैं. एंड हियर विथ ईजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ तक क्लियर हुआ और यू वांट मी टू रिपीट? किसी को समझा नहीं? CTE means, okay, right question, Hemant. What is the difference between CTE and nested query? Nested query is nothing but the sub query. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, मुझे डेट, वेयर डेट इज इक्वल टू, मुझे डेट चाहिए, मिनिमम डेट. सो इन दैट केस आई कैन नॉट मैन्युअली फाइंड, अगर मेरे पास लार्ज नंबर का डेटा होगा तो. सो इन दैट केस आई विल यूज सब क्वेरी. और सीटीई क्या होता है? सीटी होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन. उसके अंदर लेट से आई हैव बहुत एन नंबर ऑफ कॉलम्स, और मुझे वहां से कुछ कॉलम्स, एक टेम्पररी एक डेटा टेबल्स क्रिएट करना है जहाँ पे लिमिटेड डेटा होगा, और वहां से मुझे फेच करना होंगे आउटपुट्स. सो इन दैट केस आई विल यूज सिटी. इज इट क्लियर? इन शॉर्ट, टेम्पररी, यू नो द, लेट से मेरे पास एक पीपीटी है. लेट टेक एन लाइव एग्जांपल. ये पीपीटी है. ओके, ये पीपीटी को मैंने रीड ओनली का एक्सेस दिया है ओनली. अगर मुझे इसमें कुछ तो चेंजेस करने हैं, सो व्हाट आई विल डू इन दैट केस? आई विल सिंपली टेक अ बैकअप. आई विल सिंपली क्रिएट, आई विल सिंपली टेक अ सीटीई ऑफ दिस पीपीटी, और उसमें मैं चेंजेस करूंगा. अगर मैं वो सीटीई में चेंजेस करता हूँ तो विल दैट रिफ्लेक्ट देयर? नो, वो मेरे पास लिमिटेड रहेंगे. गेटिंग? प्रैक्टिकली. Yes, yes, correct, correct. Understood, understood, understood. Okay, let me go ahead. Okay, see, advanced functions. Okay, advanced functions offers a wide range of advanced function that allow you to perform complex calculation, transformation and aggregation on the data. So advanced functions के अंदर होते हैं aggregate function, conditional functional and mathematical functional. Again, we aggregate function was also part of basics subquery, basic SQLs basically. So see, aggregate function क्या होते हैं? लेट्स से मेरे पास स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट्स के मार्क्स है. तो मार्क्स में मुझे, इफ आई वांट टू फाइंड, मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स है इन वन यूनिवर्सिटी, एंड इफ आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ ऑल डेटा, so in that case it won't be possible to manually calculate, right? So in that case I will simply use aggregate function. Aggregate function is nothing but the default function होते हैं, default in SQL. See, sum means it will be calculate all the sums. Then average means it will calculate the average. Then count means it will give the count. Let's say count means जैसे कॉमन होता है ना चीजें. फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल था यहाँ पे क्वेरीज. ओके, वह एक टेबल था जहाँ पे कंट्री में हमारे यूके यूएसए थे बहुत सारे, राइट?
तो यूके के अगर 3 यूके होंगे तो इट विल शो काउंट यूके 3, इट विल शो काउंट यूएसए 2, दिस वे. And minimum means it will give the result of the minimum value. अगर मार्क्स का होगा in terms of marks it will show the minimum marks. अगर maximum होगा तो it will show the maximum marks. Instead of calculating manually, we SQL provide us the aggregate function in advanced uh, advanced query. I can say, okay, you got this thing, aggregate function. What is that? I think we had used somewhere in some queries. So then what is the conditional function? कंडीशनल जहाँ पे हमें पाइथन में भी जावा में भी कंडीशंस होते हैं, कंडीशनल if else while do while. So similarly यहाँ पे allows the conditional logic to be applied in a select statement. जहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पे हम क्वेरीज फेच करते हैं डेटाबेस से, इन दैट केस वी विल यूज द कंडीशनल फंक्शंस. ओके. So yeah, there is a one more colons. Then it returns the first non-null value in the list. अगर मेरे लिस्ट में नॉन नल वैल्यूज होंगी, नॉन नल मीन्स यू नो द मीनिंग. लेट से एक डेटा है टेबल, टेबल के अंदर मैंने एज का भी कॉलम है. सम स्टूडेंट माइट नॉट हैव मेंशन और अपडेटेड देयर एज. ओके. या इनिशियली उन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया होगा वो चीज, इन दैट केस दैट विल बी अ नल. सो ये अगर मैं इस कंडीशनल फंक्शन को यूज करता हूँ, सो इट विल रिटर्न द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू इन द एंटायर लिस्ट. गेटिंग? सो नल इफ. सो अगेन हियर सी कंपेयर टू एक्सप्रेशन एंड रिटर्न नल इफ दे आर इक्वल. सो यहाँ पे दो चीजें कंपेयर होती है एंड उसका रिजल्ट प्रिंट होता है इफ दे आर इक्वल. Okay, otherwise it will return the first expression. Getting? So next is a mathematical function. So mathematical function means let's say जैसे कि मेरे टेबल से, ओके, टेबल्स के अंदर आई हैव अ परसेंटेज कॉलम. परसेंटेज कैन बी एनीथिंग, 70.50, 50.78, समथिंग 90.31. अगर उसमें से मुझे कुछ राउंड एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होंगी या राउंडेड वैल्यू, you are getting. जैसे कि हम नॉट वी आर नॉट एवरी टाइम टेलिंग टू समवन दैट आई गॉट 80%, 80.73%, दिस वे. वी आर सिंपली राउंडिंग ऑफ. वी आर सिंपली टेलिंग 81 instead of 81, 80.73. Getting? So this way. So abs means absolute, so it will return the absolute value of the number. Absolute means you know the meaning of absolute, that is the complete value. Then round means it will return the round the number of specified number of decimal places. Getting? Then power means जैसे कि हमें कुछ पावर चाहिए होंगे, पावर इन द सेंस क्यूब, राइट. सो रेज द नंबर टू बी स्पेसिफाइड पावर. सो सिमिलरली यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट है, इट विल फाइंड द स्क्वायर रूट. गेटिंग? See, these are the default functions or default keyword. You know the meaning of keyword? Keyword means predefined word in SQL, predefined word in the languages. Mathematical done. Okay. Let's say there are few more, okay, advanced functions in the SQL. It is the bin. Let's say I am giving here my age as 18, or age 18 for the any customer or user. So if I use this command select bin is nothing but the binary. It will convert the decimal to binary. So in that case we have to use bin as a keyword. See, it definition says that it converts a decimal number to the binary number. So मेरा decimal क्या है? 18 is the decimal and binary. You know the meaning of binary, right? So binary is having a one single bit. Binary is the machine language, non-human readable language. Screen is not visible. So my screen is not visible.
Can anyone please confirm? Okay, it's visible. Okay, guys, we have to cover a few more PPTs. We have a less time, so let's consider now functionality from the system. Okay, see now again this is a important functions. Okay, this function retrieves the current date and time stamp, we can say, okay, from the system clock. अगर मैं ये क्वेरी रन करता हूँ in my database, select now, this is a functions, okay, as current date time, so it will show me the current date of system. Getting, it will show me the current date. अगर मैं same command, अगर if I'm going to run this command tomorrow, then in that case it will print the tomorrow's date with current time. Now you can remember this way, now means abhi, right now, whatever the timestamp, it should be printed. So there are again the date part. See, date parts means let's say मेरा एक डेट फॉर्मेट है, उस डेट फॉर्मेट के अंदर इफ आई वांट टू print some day, month or year, in that if I want to extract some any one of the parameter, in that case I will use date part. So okay, we will see the definition. Date part is the extract a specific part, example day, month. See here, year from a table, year from a table. It enables the data grouping and analyze the based on the time interval, such as a counting number of the order per month. So yes, इसका standard syntax. Again we are selecting, this is a data query language DQL. Getting, date part is a function. So see, जितने भी सारे functions होंगे, remember one thing, वो सारे फंक्शन वी आर राइटिंग अलोंग विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट. हैव यू ऑब्जर्व वन थिंग, यहाँ पे डेफिनेशन में भी मेंशन किया था समवेयर, वेयर इज सिलेक्ट एडवांस एडवांस फंक्शन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट. एक डेफिनेशन में कहा तो भी मेंशन था लाइक सिलेक्ट वी आर यूजिंग, यू रिमेंबर? आई हैव टू चेक बेसिकली. सी जस्ट रिमेंबर, एक जहां पर एडवांस फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे, एन नंबर ऑफ फंक्शन, we are using along with the select statement, that is the data query language. Okay, so here years and then order date as a order date from orders. So can anyone tell me what is the table name here in this entire query? ये entire query के अंदर table name क्या हो सकता है so far? Orders, exactly. Yes. So replace means again, see, यहाँ पे भी उसका मीनिंग रिप्लेस इंडिकेट होता है, नेम itself indicate that its meaning, that replace means, let's say my name is Narendra More, then if I want to change, if I want to, let's say my, if I want to update my address, if I want to change my name of apartment or name of number of flat, in that case I will use the replace as a advanced functions. Getting, instead of doing alter and all, I will simply use again as I mentioned, the functions are using along with the select statement. यहाँ पे select use किया, replace यहाँ पे description देंगे हम, nothing but kind of a comment. Then old name जो है और new name क्या हमें replace करना है, as a updated description from product. Here you can say the product is nothing but the name of table, product table से. Getting, let's go ahead. Okay. See, there is a one more very important, again I would say, view and index. View is very important. Okay, in SQL point of view. So view होता क्या है? So view is a virtual table created using the SQL command, which shows the result which shows the result as a copy of the actual table. Purpose of the creating view is to keep the original data safe and secure from the illegal operation or use. You remember CTE टेबल के अंदर हम क्या करते थे, एक बहुत सारा टेबल्स होंगे, उस टेबल के अंदर से हम कुछ रोज और कुछ डेटा सिलेक्ट करके टेम्पररी टेबल में क्रिएट करते थे, टेम्पररी टेबल में स्टोर करते थे और उसके साथ डील करते थे. गेटिंग, बट व्यू क्या होता है? व्यू मतलब मेरा जो एक्चुअल डेटा है उसको विदाउट टचिंग, without interfering with that actual table, we are simply creating a virtual copy.
Again I am saying this is a very important word, that is a virtual copy of the actual table. उसके बेसिस पे हम डील करते हैं. Let's say I have a data, where is that, ये मेरे टेबल से ओके. अगर मैं वर्चुअल टेबल क्रिएट करूँ, दैट वी कैन नॉट सी दैट वर्चुअल टेबल बेसिकली, जैसे कि मैं यहाँ पे फिजिकल टेबल देख सकता हूँ, राइट. दैट वी कैन नॉट सी व्यू टेबल, वर्चुअल टेबल. तो ये इसका एक वर्चुअली क्रिएट हो जाएगा, उसके साथ मैं डील करूंगा. इफ आई एम मेकिंग चेंजेस इन दैट वर्चुअल टेबल्स, दोज चेंजेस विल नॉट बी रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल वन. गेटिंग. अगर मेरे पास ये पीपीटी का एक बैकअप है, अगर मैं इस पीपीटी में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, लेट से यहाँ पे मैंने चेंजेस कर दिए और यहाँ पे कुछ तो मैंने चेंजेस किया, राइट. ये जो चेंजेस है ये सिर्फ इसी में रह जाएंगे, लेकिन मैंने जो एक्चुअल में किया था, एक्चुअल जो मेरा बैकअप था वो मास्टर बैकअप होगा. गेटिंग. सो सिमिलरली व्यू का यहाँ पे होता है. सो व्यू क्रिएट करने के लिए वी विल यूज अ क्रिएट एज अ कीवर्ड, देन व्यू, दिस इज अगेन द कीवर्ड, देन व्यू नेम, वी विल गिव व्यू नेम ओके. एज सिलेक्ट कॉलम नेम, कौन से कॉलम का हमें कितने कॉलम्स हमें चाहिए वर्चुअल टेबल के अंदर, those n numbers of columns we can mention here, from from which table, okay. And then we will apply the where as a clauses with condition if there is anything. Guys getting. See, view अगर कोई भी पूछता है तो you have to remember view is nothing but it will keep the original data, or it will keep or save the original or secure the original table, and it will create the copy virtually of that entire table, getting entire data. Similarly हमारे पास index होता है. Index is a copy of database table containing the key attribute of the table for which the index is created. Index is helping in searching. Okay, see, uh, forgot about this definition. Means let me tell you one example. जब हम queries रन करते हैं, let's see, यहाँ पे मैंने ये query मैप की, यहाँ पे फोकस कीजिए. ओके, नाउ आई एम रनिंग दिस क्वेरी, नाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग. सी, यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है, राइट. एग्जीक्यूटिंग योर क्वेरी, इवन दो ये एग्जीक्यूटिंग टाइम में मिली सेकंड में होगा या 30 सेकंड होगा, हाफ सेकंड होगा, तो ये इंडस्ट्री लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है. देर आर द thousands of SQL queries, lines of queries in a single table, in a single query, okay, single command prompt. सो वो एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सेकंड्स लेंगे. अगर वो हमें इंप्रूव करना है तो इन दैट केस आई विल सिंपली यूज द इंडेक्स. गाइस गेटिंग. इंडेक्स क्या होता है, फास्टर सर्च करता है. सो इंडेक्स का फॉर्मेट होता है क्रिएट इंडेक्स, देन हियर वी विल यूज द इंडेक्स नेम, देन ऑन टेबल कॉलम नेम. गेटिंग. See, there are some restriction or constraint that we cannot execute here. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे ये दो टेबल्स कंबाइन करने हैं, सो आई कैन नॉट गो अहेड एंड एग्जीक्यूट, आई कैन नॉट गो अहेड एंड जॉइन दिस टू टेबल्स. वहाँ पे सिर्फ लेफ्ट जॉइन चलेगा, शायद राइट जॉइन इट वोंट अलाउ, और इनर जॉइन भी अलाउ नहीं करेंगे, बट यू कैन ट्राई. ओके, देयर आर द एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, इफ यू वांट आई कैन शेयर दिस लिंक विथ यू. Okay, repeat CT concept one. Okay, I will repeat CT as well. Explain, replace English, please. Okay, pardon me. Sorry. I will explain. I will explain. See which part you want me to. CTE and view. Guys, focus now. What is CTE? What is the difference between CTE? Common table expression. Let me go there again. See, I have tables wherein I have n number of column and n number of rows. Okay, but if I want to deal with some data, limited data from that tables, in that case I will use common table expression. That means common table expression is nothing but the temporary tables. See here, select ABC. A is nothing but the column, B is column, C is column. From table one is nothing but the name of table. ये होगा, this is my CTE, common table expression. Okay, ये सारा कहाँ पे स्टोर होगा, where it will be stored, it will be stored in my CTE. Now my CTE
is nothing but the name of table. Clear? Understood? So here my main query will start. Select A and C column from my CTE. Earlier we used the actual name of table. Now here I am using my CTE as a virtual table. Sorry, not virtual, temporary table. So you have to use this okay word. And your concern is view. What is the view then? View means it will create a virtual table from actual table. If I want to make changes in a virtual table, that won't be reflected in actual one. So here the definition itself indicates its meaning. The purpose of creating a view is to keep a original table safe and secure from illegal operation or use. अगर मेरे if I made some mistake, like if I by mistake deleted some data of user, by mistake deleted some salary data or address or pan other anything, any details, so in that case this will be helpful view, right? Guys, getting understood? Someone was asking. Let's index cover group by group. See, group by we have already covered in the basics of basic SQL first session. Select count is we have less time. Select count customer ID. Count means it will give the count of customer ID with country column. Okay, from customer group by country. If I run this command, okay, मेरे पास let me try to run quickly. Discard. Let instead of writing whole, let me go there and will it work? No, customer id, where is customer id? Customer id, then country is there with small c. Oops, what happened? Then customers, then by country small चाहिए. Okay, see, यहाँ पे फोकस कीजिए. ग्रुप बाय, व्हाट इज द ग्रुप बाय, मीनिंग ऑफ ग्रुप बाय? ये ग्रुप करेगा. ग्रुप ऑफ व्हाट? इट विल क्रिएट अ ग्रुप ऑफ व्हाट? कंट्री. See, here is a country. See, count customer id. Are you able to see? Count customer id column will be created, column has been created. Then next column is a country, then from which table? Customer table. And here you are able to see count of countries. How much UAE is available? UAE only one, so it will show the count. How much UK is available? 2, it will show the count. How much USA is available? 2. Guys, getting? Yes, no, no, yes. Let me go ahead. See, you understood group by. Again, group by means it will create a some group. And having means having clause was added to the SQL because the where keyword cannot be used with aggregate function. See, now aggregate function, here we have aggregate function as a count. You remember aggregate function, count, max, mean, those were the aggregate functions. So here I'm using count as an aggregate function. With that aggregate function, we cannot use a where clause. So instead of where, we will use the having. Having means, let's say, select count customer ID country from customer group by country, having count customer ID is greater than 5. वही कस्टमर आईडी प्रिंट होंगे जिनका काउंट इज ग्रेटर देन 5 है. Getting? Those will be printed. Having means it with, we are saying na, we are saying like with, he is with me. So similarly having. Getting? Difference between group and having.
So this is the last topic of uh, advanced SQL, data security and integrity. Okay. So see, data security generally refers the prevention of the data from unauthorized users. It only allows to access the data to the authorized users. As I have mentioned, in my team there are the 11 members. Okay. So my manager has allowed only the access to the 11 members. That means unauthorized person cannot be used. So that is nothing but a security. So so in order to provide the security, what else organization can do? Organization should encrypt all the files and backup. You know the meaning of encrypt? Have you ever heard? जैसे हम हमारे मोबाइल में पासवर्ड अप्लाई करते हैं फॉर फोल्डर और फॉर एंटायर पीडी. हैव यू एवर हर्ड अबाउट अगर हम पीडी अटैच करते हो तो समटाइम्स इट इज आस्किंग पासवर्ड. सो दैट इज नथिंग बट द एनक्रिप्शन. एनक्रिप्शन ऑफ डिस्क का भी हो सकता है, हार्ड डिस्क का, एसएसडी का, एनीथिंग. So disable network access, then regular patches servers. Regular patches servers is nothing but the updates कहते हैं ना हम, that is. Then lockdown accounts, then ensure physical security. Okay. So this is the data security. It's a theoretical part, but you must know. Okay. Industry level पे this plays a very important role at architect level. So then again, data integrity के दो types आते हैं, physical integrity and logical integrity. So you know the meaning of integrity is defined as a data of content in the database in both correct and consistent way. Okay. For this purpose, data stored in the database must be satisfied certain types of the procedures or rules. Okay. So see, जैसे हमने primary keys mention करते थे, we used to do primary keys. Like we used to apply some rules, we used to apply some the constraint on those data. Like the generally data integrity के there are two types, physical integrity and logical integrity. आप मीनिंग से समझ पा रहे होंगे. फिजिकल मीन्स लेट्स से दिस इंक्लूड द इशू रिलेटेड टू द स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डेटा, primarily the storage devices, memory component and associates hardware. For example, if the hardware drives or memory device is damaged, it stored the data in unavoidably affected. So physical integrity means, let's say मेरे मैंने we have a database. In that database, if I have inserted some memories, some disk, so it can be a fault or failure because of human errors, or it cannot be fully fit because of oversights or of the design. It can be a natural deterioration such as a corrosion. You know the meaning of corrosion, right? Because let's say अगर metal का कुछ होगा, so in that case it will be face some corrosion kind of description. Disruption actually. Okay. Then power disruptions, that means the outage or disconnectivity of power. Then next is a natural disaster, that is nothing but the disaster recovery, that is a dr activity. Physical integrity, you understood? These are some theoretical. There is no structure, like there is no way to implement those things. Like take those are the part of taken care activity in the application. Getting yes, no, थोड़ा भी theoretical part होगा. This is the last topic. So see, even logical means what? Even when the hardware devices and infrastructure are working flawlessly, there are several considerations that affect the correctness or sensibility of the data within the respective context. Does the data make the sense, or it has to be changed unexpectedly? Logical integrity can be affected by both software design and okay. See, whenever we have integrity, as I have where is that file? Test file. So we have to apply some rules. We have to put some constraint here. Let's say मैं इस चीज को ट्राई और कैचे ब्लॉक में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. यू नो द ट्राई एंड कैचे, राइट? तो ट्राई के अंदर ये एग्जीक्यूट होगा अगर if it has some human error or logical error, then it will be catch. It will be throw that particular error. So here the definition is saying human error, transfer error, just data integrity. You have to remember these two things: physical integrity and logical integrity. Any concern, any questions? Have you attended that quiz?
Okay, quiz done. Okay, okay. Guys, if you have any question related to the interview, related to the SQL career, you may please go ahead and ask. Can you repeat the difference between with and having clause? Okay, with we are using with the CTE. Okay, and having means we are using like if I have some restriction, if I am using the aggregate function, in that case I cannot use the where. Instead of where, we will use the having. This is a major difference, Moniksha. I hope I made your doubt clear. Explain project. Okay, so see, project means you can mention like you can mention, so you will use there is a one project name I will share on WhatsApp group if there is any. Let me share here. Okay, CRUD, CRUD operation base. See, you can use this way. You can use this project CRUD operation base. This. Okay, others. The answer to your question is basic knowledge will be enough. See, if you know the advanced, then that will be well and good. But advanced में आपको सिर्फ concept पता होना चाहिए. That will be enough at fresher level. That doesn't mean अगर that I don't want to say like आप advanced में practice मत करो that okay. But you must know the basics with the practical and the advanced में ये concept आपको पता होना चाहिए like CTE क्या होता है. Actually वो industry level पे high level पे use होता है ये सारी चीजें. So interviewer will not ask expect you from at fresher level. SQL structure query language. Yes, correct. So is it done, Narendra sir? Yes, sir. It is done for my end. Okay. Yeah. Thank you so much, Naren sir. The session was very useful. Okay, you had attended all the questions, and we are so thankful for everyone who had positively respond us, and I think everyone will get the clarity about the SQL and all courses. So till now we got the 242 student has attended the quiz. So please everyone make sure that attend the quiz. After that we will send your certificate on your mail that you had registered while the registration of the exam. Is if there is any issues related to quiz, okay, like questions or anything, okay, correct mark deduction, so there is no any negative marking, so don't worry about that. Okay, and about the PPT, so PPT will be shared by us, okay, after counseling session. So I think everyone everything has been cleared by the Naren sir. So we'll end up this session.